Now, what is work? What do we mean by work? It is a physical quantity which is defined as when a force is acting on a body and the body is displaced by some distance in its own direction. What is important is displacement should be in the direction of force. Displacement should be in the direction of force. This is necessary requirement as to measure the work. So work is defined as the quantity when a force acts on a body and the body is displaced in the direction of force. So suppose this is a platform and there is a body of mass m placed on it. A force F is pulling this body in this direction, and as a result of this force, the body is displaced in this direction. So this is displacement, this is force, and this is the angle theta with which the force is acting on the body with respect to horizontal. So this is the new position of the body. So total displacement of the body is this much. The body is displaced from this position to this position. This is the displacement. So how do we give work then? Work is equal to, we require force in the direction of displacement or this displacement in the direction of force. So we have to resolve this force, and the resolved component of this force in the direction of displacement is given by F cos theta. So force is F cos theta into displacement S. So we write F as cos theta or F dot S. So work done is equal to the dot product of two vectors, that is force and displacement. Force and displacement. Now, the quantity cos theta is quite important here to spell how much is the work done. It is purely on the basis of this quantity cos theta or angle theta that we define different types of work that can happen. One is positive work. The quantity W will remain positive so far cos theta is greater than equal to 0. Now, for cos theta to be greater than equal to 0, we should have 90 degrees should be greater than equal to theta should be greater than equal to 0. So angle theta should be acute angle. So theta is acute angle. So if theta is an acute angle, the work done by the force on the body will be a positive work done. If theta angle exceeds the 90 degree, it becomes obtuse, right? Then this work will become negative. Negative work. So work is less than equal to 0. Means cos theta is less than equal to 0. And cos theta is less than equal to 0 means 180 degree is greater than equal to theta is greater than equal to 90 degree. So far angle theta ranges in between these two values, or theta is obtuse.
theta is obtuse, right? The work will be negative. Cos theta in second quadrant is always negative. So whenever this situation occurs, theta is obtuse, the work is negative. The work done by all the resistive forces, the work done by all the resistive forces as it opposes the displacement of the body, right? So theta will always be obtuse. And in all such situations, the work done is said to be negative. We saw in previous example, the resistive force of air, which was acting opposite to the displacement of the raindrop. Okay, so the work done by that resistive force came out to be negative. The reason was exactly this, because the angle theta was obtuse, and obtuse in that case, because it was just acting opposite to the displacement, the angle was 180 degrees. Okay. There is a third situation when the work done is 0. This is an important case. Work done is 0. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना तो फोर्स 0 है, ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, मगर फिर भी वर्क 0 है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है. आई एम रिपीटिंग, neither f is 0 nor displacement is 0, but still the work done on the body is 0. So this is only possible when cos theta is 0 or theta is equal to 90 degree. So when theta is exactly 90 degree, the displacement is perpendicular to the force. Whenever in a situation the displacement becomes perpendicular to the force, displacement और force दोनों perpendicular हो जाएंगे, right? This is perpendicular, this is displacement and this is the force, right? तो जब भी ये situation होगी, work done हो जाएगा 0. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे दिस इज दी डस्टर, ये मैंने लिफ्ट किया हुआ है, तो लिफ्ट करने में कहाँ फोर्स लग रहा है? फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, और इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ साइड की तरफ. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है और फोर्स वेक्टर ऊपर है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए. और इस ऐसी सिचुएशन में मैं इसको जितना मर्जी डिस्प्लेस कर दूं, वर्डन 0 रहेगा. ठीक है, तो जब वर्डन 0 रहेगा बॉडी के ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में ना तो इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, वो उतनी ही बनी रहेगी. इसका एक बहुत अच्छा ऐसा एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द मून, राइट? Though the force is acting on the moon and moon is revolving in a circular orbit and it is continuously in rotation, so displacement भी है, force भी है, मगर मून के जो स्टेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, because the total burden on the moon is 0 in this case. So it's neither gaining the kinetic energy nor it is losing the kinetic energy. It continues to revolve with the same velocity in its same orbit. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है. इसमें और भी एग्जांपल्स आते हैं. कोई कुली है, वजन उठा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जा रहे हैं, तो उसके द्वारा कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन इन दिस केस इज कंसिडर्ड टू बी 0. हाँ, अगर वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो वर्क डन होगा, नीचे उतर रहे हैं तो वर्क डन होगा, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर वो सिंपल वेट उठा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस केस में नो वर्क विल बी डन. ठीक है, सेम थिंग विल हैपन. जो लेबर होती है डंकी पर या जो पोनीज होते हैं उनके ऊपर वजन उठाते हैं, उनके ऊपर वजन रख के व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड वर्क डन इज 0. तो कोई वर्क नहीं होता उस केस में. आप कंधे पे बैग टांग के स्कूल तक जाते हो, ठीक है, आप वजन उठा के जा रहे हो,
फोर्स आपका लग रहा है ऊपर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है सामने, तो नो वर्क इज डन इन दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के काफी केसेस बन जाते हैं जिसके अंदर दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं और वर्डन उस केस में 0 हो जाता है।